Hello my dear students, I hope you all are fine. Today in this video, let's continue our summary of chapter 10, Motion and Measurement of Distance. This chapter is in physics. Now we are going to complete our summary. In the last video, we understood about what is motion, then what is rest, how can we measure the distance, what were the method used by the ancestor for measuring length, okay, why we are not using that ancestor method in real in nowadays, okay. Then we understood what is international standard unit system, means SI unit system. Then uh, three units we understood: SI unit of physical quantity length, which is meter, then mass, that is kilogram, and time, which is second. Now, today we are going to continue our summary, and in that, we'll complete the types of motion, because that one topic is left only in summary explanation. So, types of motion means whatever motion means the object move from one place to another place with respect to its surrounding is said to be in motion. Now, not all type of motion are same. Some are performing in a straight line, some are in a circular path, some are having a fixed action, some are having to and fro movement. Okay, so likewise, all the motions are seems different from each other. So that's why the motions are classified into various types. So today I will explain two extra also. Okay, so first one is rectilinear motion. Rectilinear motion means the body, whether it is living or non-living, moves in a straight path. Then it is said to be in rectilinear motion. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाती है, तो वो क्या परफॉर्म कर रही है? रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रही है. Now, second one is the example of the rectilinear motions are like light from the sun or bulb. The bulb में से जो भी लाइट आती है या सन से जो भी लाइट आती है, आप देखते हो कि वो एकदम सीधे लाइन में आती है. So it is said to be in rectilinear motion. A car which is moving on a straight highway is also said to be in a rectilinear motion. Clear? Okay, now I am moving to the next, which is curvilinear motion. Curvilinear motion means the body, whether it is living or non-living, which moves in a curve path, means which is taking in a curve path. So it is said to be in curvilinear motion. Curvilinear motion, mostly in the mountain roads, you observe that in the mountain roads, all the roads are quite wavy. Okay, it has lots of turns. So at that time, whatever the motion done by your car is said to be in curvilinear motion. Okay, some other example, let me give you that whenever you are playing catching the ball, so at that time, whatever the ball is performing the motion, that is said to be in curvilinear motion. Okay, moving to the next is and one more thing that student has answered. Okay, जब मैंने आपको पूछा था कि आपको मुझे रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर के एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में देने हैं, सो एक बच्चे ने आंसर दिया था कि बूमरैंग जो होती है वो जिस टाइप का मोशन करती है वो कर्विलिनियर मोशन है. एग्जैक्टली ही वाज राइट. सो यू कैन राइट दैट एग्जाम्पल टू. Moving to the next is circular motion. Circular motion means the body which moves in a circular path is said to be in circular motion. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्क्यूलर पाथ में मूव कर रहा है, सो वो सर्क्यूलर मोशन में है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू स्विच ऑन द फैन, एट दैट टाइम द फैन्स व्हील्स आर रोटेटिंग और moving in a circular path, so it is said to be in circular motion. सेकेंड है मैरी गो राउंड. उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी कार जब रोड पे जाती है, तो सड़क पे जब सर्कल आता है तो वो सर्कल को घूमते हुए अपने पाथ के ऊपर फॉलो अप करती है. सो इट इज ऑल्सो सेड टू बी इन सर्क्यूलर मोशन. Okay, so various and our sun, sorry, our earth is also moving in a rotating
circularly. So it is also said to be in circular motion. Actually वो motion rotatory motion है, but उसमें भी एक circular path follow up होता है without changing its axis. That's why I am saying that it can be also in a circular motion. Next one is periodic motion. Periodic motion means if any object repeats its action in a fixed time interval is said to be in periodic motion. मतलब कोई भी टाइप की एक्शन हो वो हर फिक्स टाइम में रिपीट होती है. जैसे कि स्यूइंग नीडल में क्या होता है, जैसे ही आप पैडल को प्रेस करते हो तो वो स्यूइंग नीडल है वो नीचे आती है, फिर ऊपर करो तो वो ऊपर जाती है. अब वो ऊपर नीचे ये उसकी एक्शन है जो मूव अप एंड डाउन. ओके, अब वो फिक्स टाइम इंटरवल में अप एंड डाउन करते हैं. लाइक एक सेकेंड में वो नीचे आई, एक सेकेंड में ऊपर गई, एक सेकेंड में नीचे आई, एक सेकेंड में ऊपर गई. सो आप समझ रहे हो कि उसकी एक्शन रिपीट हो रही है, लेकिन साथ साथ में वो जो एक्शन रिपीट का टाइमिंग है वो भी कैसा है, सेम है. सो इट इज सेड टू बी इन पीरियोडिक मोशन. Understood? Second example, let me give you, that is whenever we are walking, so at that time you observe that whenever your left leg is step forward, so at that time your right hand is step forward, move forward. Okay, and same vice versa. So you observe that in the march past also, the whatever the hands of the soldiers are there, that hands are also considered in a periodic motion because they are repeating the action left right left right left right. Same for the legs also, same for the hands also. Okay, so they are repeating their action in a fixed time interval, so it is said to be in periodic motion. Next example is hands of clock. आपको पता है कि जो भी सेकेंड हैंड है वो हर 60 सेकेंड के बाद वो 12 पे आके रुकता है. देन हर 60 सेकेंड के हर 60 मिनट के बाद आवर का जो हैंड है वो 12 पे आके रुकता है. सो यू कैन सी ओवर हियर दैट रिपीटिंग इट्स एक्शन. Clear? Okay, even the earth is revolving around the sun. It is taking 365 and half day. 365 and half day. Okay, so वो हर 365 and half day पे एक revolution खत्म करती है. Then हर 65 and half day पे वो second revolution complete. So you see over here that action is repeating. Action क्या है? Revolving around the sun. और time कैसा है वो भी fix है, that is 365 and half. 365 and half. So it is said to be in periodic motion. Even you can count about the rotating of earth on its axis. You can also count it as a periodic motion क्योंकि हर 24 घंटे में एक नया दिन शुरू होता है. हर 12 घंटे के बाद सनसेट होता है, हर 12 घंटे के बाद सनराइज होता है. यू सी ओवर हियर दैट एक्शन इज रिपीटिंग, दैट इज डे एंड नाइट चेंजिंग. Okay, in a fixed time interval, so it is said to be in periodic motion. Then swinging on the swing is also said to be in periodic motion. Okay, next one is oscillatory motion. Actually swing वाला जो है अभी के लिए आप उसको पीरियोडिक में काउंट करते हो, लेकिन जब आप 7th स्टैंडर्ड में आओगे तो स्विंगिंग मूवमेंट है वो ऑसिलेटरी मोशन बोली जाएगी. क्यों, वो मैं अभी समझाती हूँ. Oscillatory motion means क्या? The body which perform to and fro movement is said to be in oscillatory motion. मैडम to and fro movement क्या होता है? इमेजिन कर लो कि अगर आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आपने उसको सॉक्स में बॉल डाल दिया, उसको टाई कर दिया सीलिंग के साथ थ्रेड से. ओके, फिर आप क्या करते हो, बैट से प्रैक्टिस करते हो ना उसको हिट करने की. तो जब आप उसको एक ही बार हिट करोगे तो क्या होगा, बॉल क्या करेगा, आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा. यू सी, सो वो मूवमेंट को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट बोलते हैं. ओके, या फिर टू एंड फ्रो ना बोलना हो तो बैक एंड फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ, ऐसे मूवमेंट भी बोलते हैं. सो सच काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन. चलो वो समझ में नहीं आया तो सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ. जब आप स्प्रिंग को फोर्सफुल ऐसे दबाते हो, फिर आप स्प्रिंग को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, तो आपको पता है स्प्रिंग है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती है ना. सो उसको भी क्या बोल सकते हैं, इन ऑसिलेटरी मोशन. अब स्विंग पेंडुलम,
जो स्विंग करते हैं वो भी मतलब जब झूला झूलते हैं तो झूले में भी हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं पीछे आते हैं, आगे बैक एंड फोर्थ करते हैं. सो इट इज ऑल्सो सेड टू बी इन ऑसिलेटरी मोशन. ओके, पेंडुलम का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने की जो घड़ियां आती थी बड़ी बड़ी, सो उसके अंदर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता था जो एक रॉड के साथ अटैच होता था और वो हमेशा मूव करता रहता था साइड में. ओके, बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो लाइकवाइज. ओके, सो वो पेंडुलम को भी क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. Clear? So I hope you go through this all types of motion. Now our chapter summary is completed. Now I am moving for the exercise portion and I will first take all the objective question and then we'll move for the subjective question. Okay, so here I will start with the first one, that is give two examples each of modes of transport used on land, water and air. सो आपने चैप्टर स्टार्टिंग में ही फ्लो चार्ट पढ़ लिया था कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज क्लासिफाइड इनटू लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन. वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है. ओवर हियर इट इज रिटन गिव टू एग्जाम्पल्स, लेकिन हम हमारे सेफ्टी के लिए 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे ताकि फ्यूचर में अगर जब पेपर चेकिंग या ऐसा कोई भी टाइम हो तो उस टाइम पे अगर बाई चांस अगर आपके 2 गलत निकले तो, लेकिन आपने अगर 4 लिखे होंगे तो बाकी के 2 सही भी तो हो सकते हैं. राइट? ओके, सो हमेशा मैं आपको बोल रही हूँ जब जब भी आपको ऐसा बोला जाए कोई भी क्वेश्चन में कि गिव 2 एग्जाम्पल और गिव 1 एग्जाम्पल, हमेशा ज्यादा जितने पूछे हैं उससे ज्यादा लिखो आपके बैकअप के लिए. ठीक है. सो ओवर हियर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन द लैंड आपको पता है 2 तरीके से पॉसिबल है, रोडवेज एंड रेलवेज. रोडवेज के जितने भी व्हीकल्स है आप वो लिख सकते हो इन द रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे भी लिख सकते हो. राइट? So over here I have written buses, cars, bike, trains, etc. Likewise. Okay. 4 लिखे हैं मैंने, भले ही 2 मांगे. नेक्स्ट वन इज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन वाटर. तो आपको पता है वो कि वो 2 ही है, दैट इज शिप्स एंड बोट. ओके, हम यहाँ पे सबमरीन नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट वन is modes of transportation used on air, that is helicopter and aeroplanes. Easy to get it. Okay, so like this way you have to complete the answer. Now I am moving for the next, that is fill in the blanks. Here comes the first. 1 meter is dash centimeter. 1 मीटर का 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर. तो हम लोग जब यूनिट्स पढ़ रहे थे और यूनिट्स पढ़ने के बाद जब मेजरमेंट को डिटेल में पढ़ा तो हमें पता चला कि मीटर है वो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है और 1 मीटर के अंदर टोटल 100 डिविजन्स होते हैं और एक डिवीजन का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर. ऐसे 100 डिवीजन मतलब 1 मीटर. सो व्हाट आंसर शुड बी ओवर हियर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. Now next one is 5 किलोमीटर is dash मीटर. अब आपको किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, या मीटर में. मतलब बड़े में से आपको कहाँ पे जाना है, छोटे में. तो जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं. सो 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 meter. Clear? Moving to the next, that is motion of a child on a swing is dash. मतलब चाइल्ड जब भी स्विंग के ऊपर बैठता है और जो स्विंगिंग मूवमेंट वो परफॉर्म करता है, सो वो कौन सी मूवमेंट होती है, वो कौन से टाइप का मोशन है, एग्जैक्टली पीरियोडिक मोशन. क्यों? क्योंकि द एक्शन इज रिपीटिंग इन अ फिक्स टाइम इंटरवल. Okay, moving to the next is motion of the needle of a sewing machine is dash. मैंने अभी आपको पीरियोडिक मोशन एक्सप्लेन करते वक्त आपको एग्जांपल दिया स्यूइंग नीडल का. इस स्यूइंग नीडल इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ अप एंड डाउन इन अ फिक्स टाइम इंटरवल. हर 1 सेकेंड में ऊपर जाती है, हर 1 सेकेंड में नीचे आती है, ऊपर नीचे इन अ फिक्स टाइम इंटरवल. सो इट इज सेड टू बी इन
periodic motion. The next one is motion of a bicycle is dash. Motion of a bicycle is dash. ओके सो बाइसिकल में जब भी आप पैडल अप करते हो सो उस टाइम पे आपका व्हील कैसी मूवमेंट परफॉर्म करता है एग्जैक्टली सर्क्यूलर मूवमेंट सो सच काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी सर्क्यूलर मोशन. Moving to the next question, that is arrange the following lengths in their increasing magnitude. मतलब जो भी आपको लेंथ की मेजरमेंट प्रोवाइड की जा रही है उसको आपको बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो हियर इट इज गिवन 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर. सो आप सबसे पहले गैस करो कि इसमें से सबसे छोटा कौन है. 5, 4, 3, 2, 1 एग्जैक्टली सबसे छोटा है 1 मिलीमीटर. अब आपको मुझे ये बताना है सबसे बड़ा कौन है. ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 एग्जैक्टली किलोमीटर. सबसे छोटा कौन है 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर से बड़ा क्या होता है सेंटीमीटर. 1 मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा या मीटर एंड मीटर से बड़ा किलोमीटर. सो लाइकवाइज यू कैन अरेंज सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक. मिलीमीटर से बड़ा भाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा भाई मीटर, मीटर से बड़ा भाई किलोमीटर. राइट, सही है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेंगे. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. हमें 2 एग्जाम्पल्स देना है पीरियोडिक मोशन के. बट इन एग्जाम आप क्या करोगे, यू विल गोइंग टू राइट 2 more than 2 examples. So motion of a pendulum clock, motion of a swing, motion of a sewing needle, motion of the hands and legs of soldiers doing while march past. Okay, so likewise you can write more than 2 examples of periodic motion. I hope you enjoyed it. Okay, in the next video we will complete the subjective portion of the exercise of chapter 10. Okay, till then just keep smiling, explore yourself. Have a nice day. Bye.